कभी आप अपनी फैमिली के लिए पार्टनर हैं, कभी बेस्ट फ्रेंड, तो कभी हौसले वाली बात है। सोचे तो आप खुद से कहीं ज्यादा अपनी फैमिली के लिए एक भरोसे का साथ है। और कैसे भी समय में आपके भरोसे के साथ है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 99.35% क्लेम्स पेड रेशियो, इंडिया के भरोसे का नंबर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। This is NDTV, and you're watching NDTV 24x7. How well prepared are you for the uncertainties of life? As the last 2 years have shown us, human life is full of risks and uncertainties. So for a long, happy and protected life, it is important to ensure physical, mental and financial wellness for you and your loved ones. So why is life insurance important? It provides protection for your family, which means the people who matter the most are kept safe from financial hardship if the unexpected were to happen. It reduces financial stress during unforeseen events. It provides financial security for a future after retirement. It secures the financial future of your children. And most importantly, it gives you peace of mind, knowing that if anything were to happen to you, your family's financial security is in place thanks to life insurance. I think every single Indian today wants financial protection, and irrespective of the state of the economy, insurance for the future is a must for all Indians. Life insurance is really a way of expressing love for your family. Human life is invaluable, and so is the financial protection that you leave behind for your family. Hello and welcome. For the past 3 years, Max Life Insurance, in partnership with Kantar, has been measuring and gauging the state of urban India's financial preparedness to face future uncertainties. Now in 2022, India Protection Quotient 4.0 or IPQ brings a deeper understanding for the industry as a whole and gets a sense of the pulse of the Indian consumer where financial protection is concerned. Here is a quick look back at what the first 3 years of IPQ have shown us about the financial preparedness of India. The India Protection Quotient, conducted by Max Life Insurance in partnership with Kantar, has been gauging the pulse of the nation on financial protection since 2019. As we all know, Max Life Insurance, in partnership with Kantar, runs India Protection Quotient, a survey which is dependable and responsible, focusing on finding actually what's going on in the minds of Indian consumers with respect to protection. Over the years, the India Protection Quotient has evolved with changing times to make it sustainable and future ready. We have gone much wider and much deeper this time. We have actually added cities specifically in Tier 2, which was not covered last time. That gives it the width and the depth that is required. Over the last 3 years, we've seen the survey reflect financial awareness, ownership and security levels across urban India. So while 2/3 of the respondents owned a life insurance policy, 65% to be precise, only 21% owned the most fundamental form of insurance, the cheapest form of insurance, that of a term policy. So there was this dichotomy of people not feeling protected while having an awareness, a high-level awareness of insurance. Now, in its 4th year, the India Protection Quotient, conducted digitally, is an even more robust and comprehensive study this time round. So what is the state of urban India's current financial protection and preparedness? And how much has it changed in this last year of grave uncertainties? You'll find out in IPQ 4.0. तो अगले 3 हफ्ते हम IPQ 4.0 से मिलने वाले अहम नतीजों को समझेंगे कि किस तरह जीवन बीमा कराने और वित्तीय सुरक्षा के एहसास को लेकर जागरूकता में फर्क आया है। लेकिन आज
हम खुद बीमा को ही समझ रहे हैं। हम अपने दर्शकों के लिए इसे बहुत सरल शब्दों में बिल्कुल आसान बनाते हुए समझाने जा रहे हैं और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह बदलती हुई ज़रूरतों के हिसाब से हमारा बीमा उद्योग भी बदला है। और इसे समझाने के लिए आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के विशी विश्वनंद, रजनीश कुमार जो पूर्व चेयरमैन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, संजीव रॉय येस बैंक के और प्रांजल कामरा CEO फिनोलॉजी वेंचर्स जो कि इन्वेस्टमेंट गुरु के रूप में जाने जाते हैं और यूट्यूब पर बेहद मशहूर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। Welcome to the show. Should I say welcome back, Vishi, because it's been 3 years now, and congratulations for launching the 4th edition of India Protection Quotient. As an industry leader with 21 years of experience and expertise in life insurance, what are the trends you are noticing? Thank you, Sonia. Yes, it's a pleasure to be back. And I'm proud to say that IPQ has become perhaps an industry-leading study which is mapping India's financial preparedness year on year since 2019. In fact, the India Protection Quotient series now is in its 4th edition. And it reflects actually our company, Max Life Insurance's deep commitment to actually create a financially protected nation since privatization had begun 2 decades ago. And some instances which come to my mind is when I joined the private sector of life insurance 20 years ago, I was told that life insurance is always sold and is never bought. But guess what? Today, in our company, 18% of our customers acquired year on year, day on day, are actually coming and purchasing insurance online. Nobody has gone and sold them a policy. So things are changing. Right. Similarly, 2 decades ago, there was a single monopoly player, and now there's a vibrant 24 strong life insurance companies offering their products to choose from. So there's a plethora of options as well. And even physically, if you were to think of offices of life insurance companies, and now there are thousands and thousands of them across the nooks and corners of the country. Earlier, I recall, offices were built without even having a customer service area because customers never came to an insurance office, really, especially to the private sector. And really, they were meant to service agent advisors. But today, all our offices have customer lobbies. And interestingly, we have walk-ins of more than 1 lakh of customers per month coming in to get serviced, to understand more about their policies and to buy more. In fact, 25% of our proprietary channels sales comes from customers who came in for a service, got interested and purchased a new policy. And half our agent advisor recruitments every year is actually from customers who walk in and recommend themselves or their relatives to join our agency sales force. So in fact, things have moved dramatically in these 2 decades. And I'm happy to share that perhaps this year, we will be acquiring more new customers through our online platforms than even our agency channel. So look at the big shift that has happened. Cut to the present, I think the pandemic has permanently altered a few things. From actually being this push-based product, it has become less push and more pull. Google searches are actually witness to this. The Google searches of Indians for life insurance, best term insurance, all these have gone through the roof and is at a record high post the pandemic. And also the shift to digital, whether it is in purchasing or payments or even servicing, is a trend, is an unstoppable trend. I think that's perhaps the reason why our overall life insurance penetration to GDP ratio has increased year on year from 2.82% in FY20 to 3.2% in FY21. So very happy to see that not just the penetration is increased, but new product categories have been embraced very well. Be it pure protection plans, be it lifelong annuity plans, covering both the risks of living too short or living too long, fully guaranteed savings plans, especially for children's education, and even mortgage cover. So you find a plethora of product categories have also opened up. And finally, perhaps most importantly, this IPQ 4.0 tells us that 57% of those surveyed Indians admit that their current insurance cover is insufficient. And that's a good start. Thank you.
Mr. Rajneesh Kumar, you have been a banker for 40 years and 3 of them as chairman of the State Bank of India. You joined the bank in 1980. What was the level of financial awareness amongst people then, and what did financial planning mean then versus now? In 1980, when I joined the bank, the coverage in terms of banking services, it was not very good. It is only recently that in the last decade, the number of people who have come to the formal financial system, that has increased, and that is a good success. In 1980, the income levels were very low and the awareness about the various financial products and services was also very low. We did not have, other than LIC, and no life insurance product, a few general insurance companies that too owned by the government of India. It was only after 1991 that the financial sector was opened up, and we have seen huge progress after that, both in terms of the general awareness, including awareness about the financial products, as well as the financial inclusion initiatives which have been taken by the government to increase the coverage. So we can see a huge change between what was the situation in 1980 and what is the situation currently when we are stepping into the year 2022. संजीव जी, हमने अभी भी रजनीश कुमार जी से सुना कि पहले वित्तीय जागरूकता कैसी हुआ करती थी। आप खुद बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज हैं, आप बताइए कि देश के लोगों में जो वित्तीय मामलों की तैयारी है उसमें कितनी तब्दीली आई है, क्या बदलाव है, क्या अब ज्यादा बचत हो रही है या निवेश बढ़ा है, क्या पहले के मुकाबले अब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर भरोसा बढ़ा है? नगमा जी, धन्यवाद सवाल के लिए। मुझे लगता है सब कुछ साथ साथ हुआ है। पहली बात, जरूर जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। हम इंडियंस के बीच में पहले एक बहुत ज़्यादा प्यार होता था फिजिकल एसेट्स की तरफ, वो धीरे धीरे फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ मूव कर रहा है। लोग पहले सिर्फ ज़मीन, सोना, जो चीज़ दिखता था उनको उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते थे, निवेश ज़्यादा करते थे, सेविंग्स को उधर डायरेक्ट करते थे। पार्टिसिपेशन इन मार्केट्स, इक्विटी या आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेट और फिक्स डिपॉजिट या लाइफ इंश्योरेंस, इसके तरफ लोगों का आकर्षण और लोगों का जागरूकता दोनों बहुत बढ़ा है। 2-3 कारणों से। एक तो पूरा इकोसिस्टम जो है हमारे आसपास, डिमेटेरियलाइजेशन हुआ, रेगुलेटर्स काफ़ी स्ट्रांग हुए, बैंक्स, ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, उन लोगों ने भी सीखा, समझा और बहुत काम किया कि कस्टमर्स के लिए हम कैसे अच्छे से अच्छा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी प्रोडक्ट्स बना पाएं और कस्टमर को दे सकें। अवेयरनेस पे बहुत काम हुआ, बिकॉज जब प्राइवेटाइजेशन हुआ काफ़ी सेक्टर्स का, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, तो काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने भी काफ़ी काम किया कस्टमर्स को अवेयर करने में, कस्टमर्स के बीच में जागरूकता लाने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस पिछले 2 दशक से चल रहा है। और अगर आप देखें तो जो प्रोपोर्शन है डेटा का कि कितना फाइनेंशियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स में मूवमेंट है, वो काफ़ी चेंज हुआ है। दूसरा, अभी पिछले 2 सालों से अगर आप देखें तो काफ़ी नए, जिसको हम मिलेनियल कहते हैं, जो नए हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, 25-30 साल के उम्र के नीचे वालों, उन लोगों ने काफ़ी एक नया तरीका ढूंढा है, आयाम ढूंढा है कि अपने सेविंग्स को, छोटे छोटे सेविंग्स को कैसे इक्विटी मार्केट्स में, SIPs के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, कैसे उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें और अपने पैसे को ग्रो करते हुए देखें। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ हुआ है और अच्छे के लिए हुआ है। विशी, जैसा आपने बताया कि अब विकल्प भी बहुत हैं और 20 सालों को देखें तो बहुत चीज़ें बदली हैं। जिस तरह लोग बीमा को समझते हैं, जीवन बीमा को समझते हैं, वो बहुत बदला है। एक कॉलर है हमारे साथ इस समय, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मानिक गोयल हैं दिल्ली से ही। मानिक, आप अपना सवाल पूछिए। Hi, this is Mani Goyal and I have a question that I am just starting my career and I have a startup and basically I have my dependent parents. COVID made me think about what would happen to my family without me. I went online to look for life insurance plans, but there are so many options to choose from and platforms to buy from. It can get quite confusing for me. What can I do? How do I even start?
does it get more expensive if I buy it later in life? Thank you. Well, first and foremost, congratulations, Manik ji. You have decided to purchase a plan, purchase a policy, and you are cognizant of the insurance need. देखिए, आपके इच्छा अनुसार आपको पॉलिसी अपनी तरीके से खरीद सकते हैं. आजकल जैसे आपने बताया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दो तरीके हैं. वन, थ्रू अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो एजेंट हो सकता है या आपके बैंकर भी हो सकते हैं. और टू, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो ब्रोकर हो सकते हैं या तो इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट में भी जा सकते हैं. पर ऑनलाइन ये मत सोचे कि आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा. द गुड न्यूज इज ऑलमोस्ट ऑल, आई वुड से ऑल ब्रोकर्स एंड इंश्योरर्स हैव कॉल सेंटर्स टू गिव यू एडवाइस ऑन द फोन. सो मतलब आपको अगर एडवाइस चाहिए तो फिजिकली मिल सकता है थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजर, और फोन में मिल सकता है थ्रू अ टेलीकॉलिंग लाइसेंस्ड एजेंट एडवाइजर. सो पर आपने एक अच्छा सवाल पूछा, कब लेना चाहिए पॉलिसी. जितने पहले आप पॉलिसी ले सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि हर गुजरते साल से शायद आपका प्रीमियम बढ़ेगा ऑलमोस्ट 4 to 8%. आपके जन्मदिन के बाद 4 to 8% आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम, हर साल प्रीमियम बढ़ता है. और इसको रोकने के लिए अगर एक ही तरीका है, आप पॉलिसी खरीद लें. पॉलिसी खरीदने, क्योंकि पॉलिसी खरीदने के बाद वही प्रीमियम अमाउंट पूरा पॉलिसी प्रीमियम टर्म तक वही अमाउंट रहता है, बढ़ता नहीं है. जैसे संत कबीर ने हमें सिखाया, शायद वो इंश्योरेंस खरीदने में भी काम आएगा. कल करें सो आज करें सो अब. थैंक यू. Well, let's go across now to Mr. Pranchal Kamra, who of course is so well known as an investment guru and on YouTube, so reaching out to a whole new generation of investors there. And Mr. Kamra, investing in India has now entered the new age, as we see, and your platform, Phenology One, is meant for millennial investors. Why did you feel the need for such a platform, and how have you seen the way young Indians approach personal finance, savings, investments and insurance change in the last 2 years? Right. So, there were two reasons to it. One was from my personal experience. I started investing in 2013 and roundabouts, and all the problems that I faced, that I found that youngsters face. So, a lot of banking services, a lot of advisory services are tuned towards people who are middle-aged, advanced in their careers and have substantial savings, because then it makes sense for traditional advisors to go and service them physically. Whereas a millennial, first job, 2,000 rupees a month, 5,000 rupees a month, and at that cost, no advisor is willing to service because the service cost will not be justified. So with Phenology One, our aim was to basically, provide all the investment related solutions at one platform for millennials. 500 rupees a month, no disparity, nothing. It's equal for everyone. So that was the basic purpose. And apart from that, people, young generation, they are comfortable with everything online. So it suits us. I mean, they're very comfortable if the website is good, if the website is fast, efficient, provides them everything that they need at one click. They don't prefer walking into a branch. So that way, I think there was a gap which we wanted to fill. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं इस समय, और अंजू जोशी हैं, ये फरीदाबाद से अंजू जोशी जुड़ रही हैं और उनका सवाल है रजनीश जी के लिए. अंजू, आप अपना सवाल पूछिए. We are a family of 6, husband, wife, parents and 2 children. Do I need to buy life insurance separately for each person? Can my bank relationship manager help me in this regard? I think that if there are 6 persons in the family, the life insurance should be bought ideally for the person who is the earning member. And life insurance is always, the idea is that unfortunately if the main person on whom the family is dependent, then if something happens to him or her, then for the survivors, they should be able to maintain their existing life standard. So it is not necessary that you buy life insurance for the parents or the children.
if your husband, he is the earning member, then his life should be covered or at best jointly with you. आपके सवाल का जवाब मिला, लेकिन एक सवाल मेरा है आपसे रजनीश जी कि डाकघर अब जो है वो मूल बैंकिंग टीम के तहत आने से वित्तीय समावेश बढ़ेगा और साथ ही बचत और निवेश का चलन भी। लोग अपने वित्तीय मामलों में ज्यादा जागरूक भी होंगे और अपने जो करीबी लोग हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रख सकेंगे। क्या आपको लगता है कि फिलहाल महानगरों और छोटे शहरों में वित्तीय सुरक्षा के मामले में जो बड़ा फासला है वो जीवन बीमा और बैंकिंग उद्योग की इन मिलीजुली कोशिशों से कम हो पाएगा? बिल्कुल, और पोस्ट ऑफिस की कवरेज बहुत है, हर जगह है। मुझे लगता है कि जितना बड़ा नेटवर्क बैंकिंग सिस्टम का है उतना बड़ा नेटवर्क पोस्ट ऑफिसेस का है। और जैसा मैंने कहा कि जो बैंक्स हैं उनमें अकाउंट का नंबर वो कवरेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंश्योरेंस का ऑल्दो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे पीएम सुरक्षा बीमा योजना है और लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी है, लेकिन इनको और पुश करने की ज़रूरत है और जिससे कि एक जो लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए अबाउट द लाइफ as well as if something happens through some accident happens or somebody dies because of illness. So micro insurance जिसको बोलते हैं, where in an affordable price and a suitable life coverage can be given. So that will be very helpful for all the families who are at a relatively in the lower income segment. संजीव जी, आपके लिए हमारे कॉलर हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। नैना पांडे हैं और उनका सवाल ये है कि एक जीवन बीमा योजना खरीदना चाहते हैं पर तय नहीं हो पा रहा कि कौन सा लिया जाए, किस तरह से लिया जाए। आपके बैंक से अगर कोई योजना ली जाए तो उसके क्या फायदे हैं सीधे जीवन बीमा कंपनी से या ऑनलाइन खरीदने के मुकाबले? तो नैना जी धन्यवाद, और ये बहुत अच्छी विचार है क्योंकि इंश्योरेंस मेरे हिसाब से प्राइमरी नीड है। द मोमेंट जब आप काम करने लगते हैं, जब आपका एक इनकम स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहला चीज़ मेरे हिसाब से कस्टमर को देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे इंश्योर कर लूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास जो आपका नाम के अलावा मुझे आपकी उम्र पता नहीं, मुझे आपके परिवार का आइडिया नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप यस बैंक के कस्टमर हैं और नहीं हैं तो प्लीज़ बनिए, और अगर यस बैंक के कस्टमर हैं तो मैं अपने आरएम को कहूँगा कि आपसे 4-5 सवाल पूछे और उस सवाल के हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट कौन सा सोल्यूशन देना चाहिए। उन सवालों में टिपिकली क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपकी उम्र, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके गोल्स क्या हैं, आप आगे अपने सपनों को कैसे सजाना चाहती हैं, आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई कब करना है, अगर आप सैलरीड है आपका रिटायरमेंट एज कब होगा। प्लस उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं रिस्क एपेटाइट, यानी जोखिम उठाने की क्षमता। आप कितना अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहती हैं और कितना जोखिम लेना चाहती हैं कि रिटर्न मेरा नहीं भी हुआ तो मैं कितना तक झेल सकती हूँ। सो बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट, लाइफ स्टेज, एज एंड योर गोल्स, you decide the right kind of product across our partners. So thank you for that question, Anna ji. That's how I will answer it rather than telling you buy this product from this place. And Mr. Roy, you have seen the banking sector change over the years. As technology improves, innovations are adopted and digital platforms and transactions grow. How has that changed how banks interface with consumers? So great question, Sonia, as usual. I think I'm trying to remember my own life cycle of how I used to interact with banks as a consumer and how it has changed. There was a time when if I had to go and withdraw money from my account, or my father's account as a bearer, I would go and stand in the queue, take a token, then again sit somewhere if you get place to sit, that is, and then wait for your turn to come. And it would take hours just to withdraw money, right? Which is own hard-earned money. The thought never crossed that how come my own money takes so long for me to take it.
Today, you can't imagine customers doing that, and you can't imagine banks telling customers to do that. So it's life has changed completely, and it is not just in aspect of banking, but it is changing in all aspects of service delivery, for example. So today, bank is at the tip of your finger. It is no more about finding the nearest branch. It is at the tip of your finger. The digital offerings, both on the service side as well as on the transaction side, allows the customer to do it at in clicks of seconds, the complex of transactions and the simplest of transactions, right from viewing to doing money change, doing transfers, doing payments of your bills. Everything is today available digitally. The RM is now becoming somebody who is now no more managing your transaction, is actually looking at somebody who can manage your wealth better. So I think there's a significant change that is happening, and it is all for the good. And I think we are in with the advent of fintechs, with the advent of new technology, etc. I think it is becoming more and more consumer friendly here and now. Give me faster, give me better, and give me now. So I think that's the change that is happening, Sonia. And our next call-in is from Arushi Ranjan from Delhi. Arushi, go ahead with your question to Mr. Vishwanand. Hi. My question for you is, I am looking at buying a life insurance plan with so many companies claiming to have the best claims paid ratio. I cannot decide on who to go with. How do we take the final decision of which company to buy from? That's a fantastic question you asked. The best claims ratio in life insurance. Very simple. Ask Google. Punch in that question on your Google browser and you will get the answer. In any case, look for consistency year on year between insurers who are leading on this claims paid ratio. Also look for speed of service, whether they have services such as Insta claims. Look for that. And finally, also look for price, features, ease of purchase. And guess what? If you don't like what you have purchased after making the decision, the life insurance policy that you hold, you can turn it back. It's called a free look cancellation within 15 days of receiving the policy document in your mail, and you get all your money back. So why not? Go for it, try it, and I'm sure you will find it a pleasurable experience. And our next call-in, Mr. Roy, is a question from Sambhav Jain. Go ahead, Mr. Jain, with your question. Hello, panelist. My question to you is, as we traditionally used to invest in FD and RD for a basic rate of interest, but now as we want to take more risk and investment, as I am also salaried and into business, so what all fund would you recommend, and what about the ELSS fund, which give us rebate in the income tax slab? So good point, Mr. Jain, and I'm very happy to hear about your movement from very, very traditional safe products into products which can give you better returns on your money. Now again, as I said, there are 2-3 things to be considered when you are looking at investment, and I'll give you the framework, and for you we can do a separate financial planning and as an individual, as a customer. But the framework really is about what is your life stage and what are your goals. The goals are short term and long term in nature. So for example, if Mr. Jain, you want to buy a car in 3 years time, that can be a short term goal. You want to buy a house in 5 years time, that's a short term to medium term goal. And let's say if your kid is 5 years old and the kid is going to go into engineering at the age of 17 or 18, then it is about long term goal about 10-12 years. Now depending on the goal that you have, the quantum of money, because every goal has a value, every goal will need a certain money to be fulfilled so that you can realize the dream or the goal. Now that will decide what kind of instrument you should look at, what kind of product you should look at, and also look at how do you protect your goal. So your objective is twofold largely from a goal perspective. One, the goal should happen with or without me. And from there, your insurance solutions come into the picture. The short-term goals typically will be looking at how do we ensure that you are saving money in an accumulated manner, and it can give you the best possible amount that is required to buy your car or your home. So depending on the kind of goal, depending on your life stage and your risk appetite, we will suggest you the right kind of product for you. And our next call-in is from Delhi. I'm Ashok Lamba, living in New Delhi.
I'm a retired person. My question is, digital banking is all the rage nowadays. For a senior citizen like me, who is used to papers and face-to-face interactions, how much can I trust digital platforms to take care of my financial protection needs? Digital is what the current trend is, and I do understand the difficulties which many senior citizens face in adopting the digital. So no doubt it is very convenient, and of course, like going to a bank branch or going to any other office, this is also equally strenuous for any senior citizen, but still I think there is a good network of branches, and it is the comfort level of an individual with digital, or whether they want to interact and do their banking business or any other business in the physical form. So both have their advantages and maybe some disadvantages also. But adoption of digital by the senior citizens, I think that is much slower, and most of the senior citizens in the country or elsewhere in the world, I presume, so they are hesitant to adopt digital. But in terms of convenience, I think it is very convenient once you start using it. आपके तमाम सवाल और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ ये बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। कभी आप अपनी फैमिली के लिए पार्टनर हैं, कभी बेस्ट फ्रेंड, तो कभी हौसले वाली बात है। सोचे तो आप खुद से कहीं ज्यादा अपनी फैमिली के लिए एक भरोसे का साथ है। और कैसे भी समय में आपके भरोसे के साथ है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 99.35% क्लेम्स पेड रेशियो, इंडिया के भरोसे का नंबर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। Welcome back to the show. Vishy, I believe you have a question for the Sanjeev. Go ahead. Thank you so much, Sonia ji, Nagma ji, with your permission. Sanjeev, you've been a veteran in both insurance and in bank assurance now. From a consumer's point of view, why should one decide to purchase insurance from his or her banker rather than agent advisor or go online? Coming from a veteran like yourself, Vishy, who is a bigger veteran than me, I'll treat it as a compliment. But I think it's a very pertinent question, and somebody should. And it's a very right question for a customer to ask. What do banks offer that an online channel or an agent cannot offer? My answer to this would be in two-pronged approach. One is that banks understand your finances in a wholesome way. So as a bank, you are dealing with the bank from your savings perspective as well as from your investment and your loan needs as well. So your borrowing and your saving needs both are getting taken care of with the bank. So a good RM, a relationship manager, or even the branch manager has a good 360-degree view of your finances. And what kind of product you should buy from a life insurance perspective will get determined based on what kind of disposable savings do you have, what kind of earnings do you have, and what kind of future goals do you have. So unlike a product, a banker should be able to give you a better solution based on your need analysis as well as a 360-degree view of your finances. Second point, when it comes to servicing, if you go to a channel and buy, let's say, an online channel or an agent, you only get serviced for that particular transaction. Let's say if you bought a policy from one agent versus another agent versus another agent, you have to go to 3 different agents to get one policy or 3 different policies served from the same insurance company maybe, or for that matter, different insurance companies. That's very well articulated, Sanjeev. Thank you. So essentially what you're saying is being a financial supermarket, offering a plethora of insurance service providers, offering actually a complete, comprehensive financial plan, not just an insurance need. And finally, instead of moving away actually from transactions to more relationships. Fantastic. Thank you. Yeah. So I couldn't have articulated it better. Thank you, Ishi.
और प्रांजल, आपका एक YouTube चैनल भी है जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर वित्तीय मामलों से जुड़े बुनियादी वीडियो डालते हैं आप, और इसे देखकर एक ऐसा शख्स भी समझ सकता है जिसे इन बातों का बहुत ज़्यादा ज्ञान न हो। इस वक्त आप हमें 5 ऐसी चीज़ें बताएं जिससे हमारे देखने वालों के पैसों का सबसे बेहतर इस्तेमाल हो सके। राइट, तो अगर मैं आपको सही से सुन पाया तो आपने मुझसे 5 ऐसी चीजें पूछी हैं जो एक बिगिनर भी, जिसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता, वो भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सके, क्योंकि थोड़ा सा ऑडियो बीच में रुका था। मैं सही सुन पाया आपका सवाल? जी बिल्कुल, यही हम जानना चाहते हैं कि आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आप बहुत अच्छे वीडियोस डालते हैं फाइनेंस से जुड़े हुए, तो कुछ ऐसा बताएं आपकी जो लोग इस समय ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कुछ टिप्स दें कि 5 कुछ ऐसी बातें कि देखने वालों के पैसों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। राइट, तो देखिए, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म आना जरूरी है। तो सही प्लेटफॉर्म के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया कि लाइफ इंश्योरेंस ना आप जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी प्रीमियम फिक्स हो जाएगा, वो जिंदगी भर उतना ही रहेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हर साल रिन्यूअल आया, प्रीमियम बढ़ता है। लाइफ इंश्योरेंस में फिक्स हो जाता है, तो आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं। पहली सैलरी का बेस्ट यूज होता है कि आप ना लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए। दूसरा ये होता है कि इसके पहले कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें, आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, ताकि कहीं आप बीमार होते हैं तो आपकी सेविंग्स, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको लिक्विडेट ना करना पड़े। तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ना आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। थर्ड स्टेप ये होता है कि इन्वेस्टमेंट के पहले आप कम से कम 4-6 महीनों के जो आपके खर्चे हैं, जैसे अगर आपके महीने के खर्चे 10,000 रुपए के हैं, तो आप 50-60 हजार रुपए सेविंग्स अकाउंट में रखिए, उसमें ऑटो स्वीप ऑन करिए ताकि इंटरेस्ट ज्यादा मिले, और वो आपका इमरजेंसी फंड है, मिनिमम रिक्वायर्ड इमरजेंसी फंड है। तो जब आप ये 3 स्टेप्स कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको सीरियसली इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचना है। और उसमें भी एक जो ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है, जो मैं कहता हूं कि बिना मैं इंसान को जाने, शायद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं हर किसी को कह सकता हूं, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है। हम जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी एकदम से हमें ध्यान आता है, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थोड़ा निग्लेक्टेड है। आपको गोल्ड जितना रिटर्न मिलता है, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, ये सब नहीं लगता है। कोई भी जो गोल्ड की प्योर वैल्यू है ना, वो आपको मिल पाती है, बीच में कोई चार्जेस नहीं है। प्लस आपको सेविंग्स अकाउंट जितना 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में। तो गोल्ड के साथ ना बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी कि इट जस्ट सिट्स एंड डज नथिंग। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। उसके बाद आता है 5वां स्टेप कि आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप टाइम दे सकते हैं या आपको मजा आता है तो स्टॉक्स पे जाइए। अगर आप बिल्कुल पैसिव इनकम चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में जाइए। इस समय एक और कॉलर है हमारे साथ, और प्रांजल आपसे सवाल पूछना चाहते हैं नकी अब्बास। नकी अब्बास का ये सवाल है, वो एक बुजुर्ग हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, वो एक ऐसी जगह पे निवेश करना चाहते हैं जहाँ पे उनका पैसा सुरक्षित रहे और साथ साथ उन्हें कुछ नियमित आमदनी होती रहे, जिससे कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हों, कुछ ट्रैवल, कुछ मनोरंजन के लिए भी बच जाए। तो आप क्या सुझाव देंगे उन्हें? नहीं, मैं इन्हें यही कहूंगा कि अगर वो ऐसा पैसा है जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जिससे वो खर्च करते हैं, तो उसके साथ ना बिल्कुल भी फैंसी मत होइएगा, बिल्कुल भी उस पर रिस्क लेने की कोशिश मत करिएगा। उसे सेविंग्स अकाउंट में रखिए, उस पर आप ऑटो स्वीप ऑन कर सकते हैं। अगर आप ऑटो स्वीप उस पर ऑन करेंगे तो सेविंग्स अकाउंट की लिक्विडिटी आपको मिलेगी और साथ ही आपको एफडी जितना रिटर्न भी मिलेगा। तो सेफ रखिए, आपके लिए पैसे को सेफ रखना सबसे जरूरी है, बिल्कुल भी एडवेंचरस मत होइए। Thank you. And our next question is for Vishi. Hi, I'm Navreet Sahi and I'm calling from Dalhousie. My question to you is this. I'm a working woman with a family of 4. My husband is also working. What, as per you, should be the adequate cover to help me meet the financial needs of my family in the future? Is a cover of rupees 5 lakh life insurance policy sufficient? I recall distinctly 21 years ago, my very first prospective customer I met said exactly the same to me, said, I have enough insurance, I have 10 lakhs of cover. But I realized after sitting with the individual that he was paying more premiums for his car insurances than he was for his life insurance. And guess what? He did
purchase a life cover, a good one. And thank God for that, because an unfortunate accident 8 months later took him away. And he bought from us, he bought from another insurance company, and thanks to that, his wife and his daughter still have financial independence. So what is the right cover? I think there are 5 factors to look at. One is your age. Second is your expenses, monthly as well as recurring. Your savings, your current level of savings, and your desired level of savings or the goals of what you'd like to save. And finally, your outstanding loans. You want it simpler? Just go to Human Life Value Calculator that's there in the Max Life site, and it'll ask these 5 questions and give you and prescribe to you what is the adequate sum assured that you need to cover your life. You want to do an even simpler solution? Typically go for a thumb rule of 10 times your annual income. 10 times your annual income, especially if you're in age group 30 to 45. If you're under 30, then you go for maybe 15 times your annual income. So it's as simple as that. But go ahead and make that decision now. विशी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो जीवन बीमा उद्योग भारत में है वो विकास की राह पे है। अगले 3 साल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है? नगमा जी, 3 सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड्स जो मुझे दिख रहा है। नंबर 1, मोड ऑफ परचेज, यानी खरीदारी की तरीके। सेकंड, प्रेफर्ड स्टाइल, जैसे किसी से इंश्योरेंस करवाना है या खुद करें। और तीसरी बात जो एवरीवन इज वेरी फेमिलियर विद इट, स्पीड, यानी रफ्तार। तो खरीदने का तरीका आजकल बहुत सारे हैं, अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। जैसे एजेंट चुन सकते थे पहले, अभी भी एजेंट्स हैं। बैंकर्स आजकल काफी हैं जहां से आप खरीद सकते हैं। और तीसरी बात, और अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऑनलाइन। तो ये 3 ऑप्शंस हैं और ये रहेगा। इनफैक्ट मोर एंड मोर टुवर्ड्स ऑनलाइन जाने का ट्रेंड्स दिख रहे हैं। सेकेंडली, इंश्योरेंस किसी से करवाएं, पॉलिसी किसी से करवाएं या खुद करें। सो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, जो आपने सुना होगा, डू इट फॉर मी शिफ्टिंग टू डू इट योरसेल्फ। तो ये हो रहा है। इसीलिए हमारे सारे एजेंट्स और बैंक एश्योरेंस सेलर्स को हम सिखाते हैं कि सिर्फ पॉलिसी बेचना हमारा काम नहीं है, पर कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट्स को खरीदारी में मदद करना हमारा काम है। और तीसरी बात, रफ्तार। आजकल ऑनलाइन चैटबॉट्स के माध्यम से इंस्टेंट संपर्क कर सकते हैं, पॉलिसी खरीदारी में, प्रीमियम भरने में और क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे भी। मुझे बिल्कुल आशा है मैक्स लाइफ अपनी प्रयास से IPQ के माध्यम तमाम भारतवासियों को जीवन बीमा की अवेयरनेस, जागरूकता को और बढ़ाएगा। देखिए, अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है तो पहले भारतवासियों को अपनी आर्थिक निर्भरता बनाना चाहिए, है ना? थैंक यू। ये बात साफ है कि जो आपका लक्ष्य है उसी हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से निवेश करें, किन चीज़ों में निवेश करें। तो बहुत शुक्रिया आपका विशी विश्वानंद, रजनीश कुमार, संजीव रॉय और प्रांजल कामरा। And our next show is on March the 5th, where we will talk about India Protection Quotient 4.0 and what the study reveals in this edition. Join us then. Thank you. कभी आप अपनी फैमिली के लिए पार्टनर हैं, कभी बेस्ट फ्रेंड, तो कभी हौसले वाली बात है। सोचे तो आप खुद से कहीं ज्यादा अपनी फैमिली के लिए एक भरोसे का साथ है। और कैसे भी समय में आपके भरोसे के साथ है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 99.35% क्लेम्स पेड रेशियो, इंडिया के भरोसे का नंबर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस।